Hmm? Okay. So good morning, everyone. Today we're again here on the online platform of SNS, and today we're gonna solve the doubt session after the syllabus that is supposed to come in the next exam. So before you will start asking me the doubts regarding your syllabus, so let me just start a topic regarding this thing that I will just tell you about the syllabus, the pattern, weightage, and marks. So basically, we have three sections of syllabus that we're going to have to deal in the examination. Part first is section A is called reading comprehension. So this is reading comprehension. Again, you're going to have to understand it at its roots. First thing that we're going to have to understand is that we have a note making pattern kind of question. Note making, as we have done number of times in the classes, you have done at least twice or thrice you have done the examination of this, but still I will tell you about this, the format, the pattern, and its elements and purpose. The second is that is unseen passage. Unseen passage, it has the equal marks. Note making 10 marks, passage 10 marks. Again, a bonus point for you. As we all know that to get the 10 marks in English literature is not an easy job. So if we will start with the note making is a kind of advanced technology. It's an advanced technology that we're going to have to deal with the bulk of this knowledge that has emerged from last 1 century. So we're going to have to deal with how to save time. It is time saving, and again you're going to have to look at as the new technique to deal. This is a new technique to deal with the syllabus kind of pattern. So one by one I will tell you regarding this first session. That is the first section, that is reading comprehension. If I will start with note making. Note making is, again, I already told you, it is a decoding of passage. So I will say this: note making and the elements that we need, format, and its purpose. You know what? Purpose, elements, format. I will deal one by one. Okay. So before I will get your comments on this doubt session, that what exactly doubt, so then I will get straight to that point. But unless you will not get into that, I will just deal with this thing. Note making is basically what I already told you, that it is a new technique. This is the new technique to deal with the mass syllabus or material or content. But before I will tell you, I should just examine the kind of definition that note making carries. It is what? It is basically, note making is, we're doing it for the personal purpose. As we all know that I have already told in the class so many times that this is a personal use. Note making is always a personal use, that how we will deal with the content and how you will save your time, and then you will deal with the content at its best. So purpose of this is this, that we gonna have to deal with a mass kind of syllabus or a content and save our time to make the notes that is of personal use. Again, I repeat again and again that these notes are of personal use. But unfortunately, we have this syllabus in that pattern that unfortunately we're going to have to write it on the paper and somebody is going to examine it. So that's a technical fault. That's not our fault or yours fault. That's a technical fault. But you should always remember that this is always a personal use. Note making is always a personal use, as I will show you now. Note making is always having some fundamental elements when you will start it. The first element is this, according to the format. What format says? Format says that you have a passage.
For example, in the examination, you will get a passage like this. Suppose this is a passage and there is some content, there is some topic written on this, and we're going to have to deal with it. But the thing is this, when you will deal with this, you will see that this exactly should have some content, some meaning, some relevance, some topic, or some headings. That is on the basis of this, it's called plot. It must be having some plot on this. There must be a purpose or a manifesto of this. We're going to have to understand the manifesto of this. So in the examination, when you will get this passage, you're going to have to read it. When you will read it, your reading should be decoding it. The time you are reading a passage, that reading should be decoding the passage. And that is what is the purpose of note making. I already told you that you should deal with the manifesto and the purpose of note making. That is to decode the passage. It's about decoding. If you're able to understand, if you're able to read the passage at its very best form, that is the highest possibility that your notes will be of very effective way. Your notes will be very effective. It will be very a kind of masterly notes, or you can say that it can be very creative as for the format of this pattern is concerned. So I will deal it with this thing. Okay, now pattern. What is the pattern of note making? Pattern, or we say always format. What is the format of note making? You know what? After decoding, I will just write here decoding in a very bold way so that you can understand it again and again. But I'm telling you that your main purpose, the main manifesto, the main reason, the creative work that we're going to have to do is to decode this page. Now, we have passage, we have read it, we have decoded it, and it has a purpose, has a title, has a manifesto, has the creativity and everything. But now, how to write it now? Now we have to make the notes out of it. Our topic is note making. We have to make now notes. Again, I will tell you that pattern that you're going to have to follow. You have the main target is to kill the length. You're going to have to kill the length of the passage. If you write the passage again, then there is no fun of making notes. Note making should be what? It should be that you have to kill the length of the note making. So on the basis of this, the first thing is this, that the format says that we all have to avoid the full sentences. So the first point is avoid the full sentences. Now, if we have to avoid the full sentences, then how to write it? You have to write in the phrases. You have to write in the verses. You have to write in the symbols. You have to write in the abbreviations. And abbreviations or contractions, I will just like to say contractions. You have to contract words. This is the contractions that you have to use. Now, abbreviations, if I will say abbreviations, as you have already done in the class, abbreviations can be of two types. One, personal abbreviation, another universal abbreviation. Abbreviations can be of two kinds. One is personal, another is universal. Personal, I already told you, no personal kind of thing. So you can use lots of personal abbreviations to kill the length. That is the manifesto of making these notes. Then the second or the third thing is this: you have to be in the logical sequence. When you are hitting the length, when you are targeting the length of that passage, the foremost and the most logical thing is this, that your point should be in the sequence. Yes, your point should be in the sequence. When it is in sequence, that means what? The logistic is always at the top. The logistic is always at the top. The priority is logic. You have to kill the length, not the kind of this what's called the logic. Yes, logic should be there as it is. Now, the fourth or fifth point is this, that whenever you are writing it, you have to use symbols. I already told you. I already told you that symbols. Suppose the price increases.
the price increases. We can use arrow. The price again decreases. We can use the arrow downwards. Upwards it's arise, downwards it's called this. And when you have to abbreviate words, when you have to abbreviate words means that the sound of the word should not be killed. Suppose I have to say education. I have to say education, I can just use edu. That means the abbreviated word or the symbol or the sound of the word is not broken. So in that way, there are so many things that you can add on. But the most logical thing that you're going to have to do is this. You have to kill the length. You have to kill the length again with the logical sequence. Now, I already told you that your reading capacity must be very good. When you are able to read this passage, the passage that will come in our exam format, this is the passage given in the examination. You have read it, I will say, read it twice, not twice, but thrice, because it makes things very clear as psychology says, right? And now, if you have done it in a very sequence way, in a very eloquent way, that means what? That means your points that you are supposed to make out of it, your points should be in very, a kind of, there will be weight in the points, it will be logical, it will be factual, and it will tell the gist of the passage. That is the main purpose of all this. Now you have made points. Now you have to make it points. The point should be the first point should be main point first. It should be like this: main point first, then it should follow with the subheadings. It should follow with the subheadings, yeah, sub points, not headings but points. It should follow with the sub points. Main point followed by sub points, and then again point second, that is main point second. Main point second. It should again follow with the sub points. It will again follow with the sub points. Yes, sub points. Suppose it's you have make 5 sentences, or not sentences but verses, and you have here make 5 sub points. 5 sub points, 5 sub points. That means what? That means your abbreviation will be of at least 10 words. Your liberty and your freedom of abbreviating in a passage, it should not be more than 10 words. It should be within 10 words. And here you're going to have to make a box. You have to write at the top like abbreviation. Then you have to word the abbreviated word you have to write here, and then you have to write in the full form. Here is the shorter version, abbreviated form, and here is the full form, right? Abbreviated form and full form here. And now, by the way, when you have done with this thing, when main point first is over, when main point second is over, that means what? That means the main purpose of note making is over. You have done it in a very logical way. And now you have to summarize it. You're going to have to summarize it. You have to summarize what? Summarize what? Summarize not the passage, because we have done with that thing. Passage is over. We have made points. That means passage is over. Now you have to make points of what? Of your main point first. Main point first with the sub points, and then main point second. Main point second again with sub points. Understand what this means? Your summary should be of your points that you have make out of it, not of the passage, because passage that we have done, passage is over. And now when you will write it, that means what? That means your whole all the elements, all the parameters of code are over. Now I will tell you how to write it. Now first, there is a space of title. You have to left it like this. You write a title, but don't write title at first. Make first points. Your main point first,
This is main point first. This is main point first and sub points. This is main point second with sub points. Now, then you have summarize it again. When you have make it main point first, that is over. When it is main point second, that is again over. When you have summarized it, that means what? That means the title is now very accurate in your mind. I am suggesting you, do not write the title at first. As for me, if you listen to me, then again I advise you that please after main point second and main point first, you're going to have to summarize it, and then please after that, that means now you have decoded the passage at its very best. Now you are able to write the title, whatever that will be, or heading at the top. So that is what the format says exactly. So now if you have any doubt, Aunt Jennifer's की summary बता दो. Okay, Jennifer Tiger की summary बता दो. Basically बच्चे, Jennifer जो है prose नहीं है, वो एक poem है. But I will tell you. Don't worry, I will tell you. Okay. Okay. Okay now. Jennifer's Tigers. You know what? Jennifer's Tigers again. This is a very contemporary poem. When I say contemporary poem, that means what? That means it deals with the problems of the society that exists even today. Do you understand? And by the way, this is a poem that deals with the feministic point of view, you know? It deals with the feminist point of view. Yes, you have to understand it. So basically, I will tell you again now in the details what it exactly means. So we have Aunt Jennifer. Okay. She's a lady who's got married. Again, it is a social kind of contract that we all are going to have to deal. Is a social contract that she was having. She was married. She was a woman. I use this word deliberately. She was a woman because a married woman in a society where the males are dominating, it is very tough to survive there and to demand for your rights and justice or equality as a woman. It was very tough in that time. Basically, in the American society, this thing, प्लीज आप मुझे कमेंट में बोल दो कि मैं हिंदी में बोल दूं, क्योंकि आप लोगों को क्लास में हिंदी सुनने की आदत बड़ी पड़ी है. अगर आपको हिंदी में भी चाहिए तो मैं बच्चे हिंदी में बोल सकता हूँ, ठीक है ना. बस माय पॉइंट इज दिस कि आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए. मैं अंग्रेजी बोलूंगा या हिंदी बोलूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. फर्क पड़ता है कि क्या आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं क्या. सो प्लीज अगर आपको उसके बारे में भी कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो. ओके, अच्छा, नाउ व्हाट? Aunt Jennifer, she was a woman who was at the receiving end. She was the victim of this male society, male dominating. She was a victim of this male dominating society, and now saying that's the stand. Somebody has to, break these shackles and barriers of this injustice and of this denial that is being displayed by these male people everywhere. So she was a working woman. She had to work, she had to earn the bread, and the males were supposed to take rest, and it was the responsibility of women to feed them. So that was absolutely injustice. It was absolutely injustice. It was absolutely out of this mind. But since the conditions of the time were like this, so nobody was taking the stand. It was Aunt Jennifer, basically, who took the stand, and she said that somebody has to say no. You know what? When you say no, that means you are in the form of resistance. To say no is a resistance, is a protest. Right? And she done it not with the people,
not with the crowd, but with her art. Basically, she was an artist. And by the way, I will tell you, art, it never dies. Art is everlasting. Art is everlasting. It has appeal for every age. Appeal for every age, generation, or whatever. It never fades away. Art never fades away. So she done what? She make the tigers out of the art. By the way, when she was making the tigers of with this art, the tigers are what? Tiger is the symbol of what? That is fearlessness. Tiger is a symbol of fearlessness. Right. So Aunt Jennifer says that with her art, she says that there were tigers who were coming from a forest and they were prancing, they were marching, or they were coming towards the society, towards the people where they were dwelling, where they were, resisting. And now, when she says that the tigers were coming, the males were playing the cards. The males they were playing cards under the tree. They were maybe drunk, and they were playing the cards. They were having no responsibility of their life, no responsibility of their family. And by the way, when these tigers came, they came with the message, that was for this message was for the age and generations. The message was very clear. It was very crystal. The message was that, these females, when they will be fearless, they will behave like these tigers, as tigers are fearless, right? But this art, by the way, the relevance of this art is very pragmatic. This art it has been used very metaphorically. This art has been used metaphorically. This art is having this appeal that says that, metaphorically, the appeal is what? Appeal is that you are not able to erase, or you are not able to deny, or you are not able to disown the half population of any society. Half population of any society. Do you understand? So this is the majestic appeal. This is the majestic, the central thought of this poem. That Aunt Jennifer, through the art of the tigers, the embroidering that she was doing by making tigers, she was saying that these tigers are fearless, and so should we be. And if somebody has to take stand, so why not me? As an artist, I should show all these things, that this is the high time to say no. To say no for what? No for injustice. No for injustice. No for denial of rights. And the disowning of the half population that was at the receiving end. So this is the brief kind of thing that I have just told you about the central thought of this poem. If you have any doubt, then please, you are free will to ask me anything. Yes, but I will not wait for your query, because I am saying that nobody is writing anything. On Jennifer is okay, I have done it. If something else is there, then please tell me. But my target is to, in the syllabus, in your syllabus, you have letter writing, you have article writing, and then you have note making, then you have and then you have unseen passage, then you have
अनसीन पैसेज। तो ये सारी चीजें हैं बच्चे जो आपको टारगेट करने हैं एट द अर्लीस्ट, बिकॉज इसमें क्या है, इसमें आपके मार्क्स बहुत ज्यादा है और एफर्ट्स बहुत कम है। शाबाश, इसके मार्क्स बहुत ज्यादा है और एफर्ट्स बहुत कम है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इनको टारगेट करो। इससे आपको क्या हो जाएगा, जो आपकी परसेंटेज है, जो आपके मार्क्स है, वो बूस्ट हो जाएंगे। और ये चीजें ऐसी है, अगर आपको ये चीजें को वो करना आएगा तो योर हाफ द सिलेबस इज ओवर, योर हाफ द पैकेज ऑफ द मार्क्स इज ओवर। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको कोई इंपॉर्टेंट बता दो सर, इंपॉर्टेंट सब कुछ है बच्चे, इंपॉर्टेंट इज एवरीथिंग। इंपॉर्टेंट इज नॉट कि मैं आपको कोई बताऊंगा यहाँ पे कोई क्वेश्चन है वही आएगा, ऐसा नहीं होता है बच्चे। एवरी चैप्टर, एवरी राइटिंग स्किल इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंस ऑफ द सिलेबस। अब मैं आपको बोलूंगा कि आपको कुछ और करना पड़ेगा। देखो, लेटर तो आपको आएगी आएगी, लेटर आपको आएगी, इसके 6 मार्क्स, इसका क्या बोलते हैं, इसके बाद क्या है, जॉब एप्लीकेशन। शाबाश, ये तो मैं भूल ही गया था, जॉब एप्लीकेशन, इसके भी आपके 6 मार्क्स है, तो 12 नंबर आपके लेटर के हैं। अगर आपको लेटर राइटिंग का फॉर्मेट आता है, मैं फॉर्मल की बात करता हूं बच्चे, इफ यू आर एबल टू राइट द फॉर्मल लेटर फॉर्मेट, इफ यू आर लर्न दैट फॉर्मल लेटर फॉर्मेट, तो क्या होगा बच्चे, यू विल हिट द 12 मार्क्स आउट ऑफ इट। अब बताओ, इतना इजी प्रोसेस है इसका। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में, लेटर राइटिंग के बारे में बच्चे। सबसे पहले क्या आता है, फॉर्मल की बात करता हूं, बिकॉज इनफॉर्मल का कोई फॉर्मेट नहीं होता है बच्चे, डू अंडरस्टैंड। इनफॉर्मल लेटर का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, तो मैं फॉर्मल की बात कर रहा हूं। मैं यहां लिखता हूं ऊपर बोर्ड पे, आई विल जस्ट राइट डाउन हियर फॉर्मल लेटर, उसका फॉर्मेट पहले क्या आएगा बच्चे, फर्स्ट इट विल कम सेंडर्स एड्रेस, आप लेटर कहां से लिख रहे हो, देन डेट। अच्छा, डेट लिखना किस तरह होता है, डेट फुल लेंथ में। फुल लेंथ क्या होता है बच्चे, आज की डेट क्या है, टुडे इज 28 नवंबर 2025, like this. Always write the date in the full form when you are writing a formal letter. इसके बाद क्या आएगा, then receiver's address, right? Receiver's address के बाद क्या आता है, you all know subject. Subject is what? Subject is the soul of letter. Subject means जो भी आपने लिखना है वो सब कुछ वो एक सिंगल लाइन में आना चाहिए, वन सिंगल लाइन, नॉट मोर देन 8 वर्ड्स, इतना ही आएगा एक लाइन में। तो सब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज विद इन 1 लाइन, इट शुड बी ब्रीफ विद इन 1 लाइन, योर सब्जेक्ट, एंड देन comes salutation. You all know what the salutation, you know, the formal letters that we always use to greet the authority or these kind of things, whatever you have write in the letter. It could be DC, it could be Ms. SP, it could be DSP, it could be PM, it could be president, anything bache, that you have to write about. After salutation, you will come to the body of the letter. The body of letter, always remember, you have to write in 3 parts. Part first, that is introductory part, introductory part. Part second, details of letter, whatever you have, details of letter. And part third is, that is conclusion. Conclusion, but not in the commanding way, but being generous and polite, right? This is the format. And then after body, I will write here, after body, then description. Description means your name and designation. तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर ये फॉर्मेट आपको आता है तो इसके आपके 6 नंबर फॉर्मल लेटर में आएंगे। अब मैं इसी फॉर्मेट को यूज करता हूं कहां पे बच्चे, जॉब एप्लीकेशन में। जॉब एप्लीकेशन में थोड़ा सा इसको ऑल्टर करना है तो आपको अगेन इसके 6 नंबर मिल जाएंगे, तो आपके लिए बोनस पॉइंट है, डू यू अंडरस्टैंड। तो फॉर्मल लेटर को आपने थोड़ा सा ऑल्टर करना है। ऑल्टर क्या करना है, आपने यहां तक सही लिखना है
फिर आपने क्या करना है, बॉडी ऑफ लेटर जो है, बॉडी ऑफ लेटर के बाद आपने क्या करना है, आपने अपना बायोडेटा आपने इसमें ऐड करना है। बायोडेटा क्या होता है, नाम, ईमेल, फोन, है ना, क्वालिफिकेशन, ईयर, परसेंटेज, यूनिवर्सिटी, डिग्रीज, सब कुछ उसमें मेंशन करना है। तो अगर आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आता है तो आपको अलग से इसके 6 नंबर मिल जाएंगे फॉर्मल लेटर में, और आपने इसको जॉब में थोड़ा सा ऑल्टर करना है। बस आपने क्या करना है, आपने अपना सीवी इसमें ऐड करना है, तो इसके आपको अगेन 6 नंबर मिल, मतलब 12 नंबर आपको मिल जाएंगे इस फॉर्मेट से। तो इससे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, ये तो पक्का आएगा आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लिटरेचर का सिलेबस, आप मुझे बोलो बच्चे, लिटरेचर में आपको 10-20 चैप्टर है, एक नाम बताओ जिसको मैं आपको बोल सकता हूं, ऐसा थोड़ी होगा। लिटरेचर सिलेबस आपको पता नहीं है बच्चे? लिटरेचर का सिलेबस मेरे पास जो अभी क्या बोलते हैं मटेरियल है, तो आपको एक तो आपके एनिमी नहीं आएगा, ठीक है बच्चे, एनिमी नहीं आएगा, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड नहीं आएगा, ठीक है, और इसके बाद मेरे ख्याल से बाकी सारा ही है जो हमने आज तक किया है, जो अपने क्लास में किया है, जो भी आप लोगों ने किया है एनिमी को छोड़ के और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड को छोड़ के, रेस्ट एवरीथिंग विल कम। डू यू अंडरस्टैंड? अब आप मुझे बोलो कि मैं आपको क्या पढ़ाऊं, तो इसलिए मैं आपको आपका वेट कर रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये आपके बड़े मार्जिन वाले हैं, जैसे रिवर, अगर आप मुझे डाउट्स बोलोगे तो मैं आपको वहां से ही स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज मैं ही बोलते जाऊंगा और आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। लॉन्ग क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएंगे, अगेन वेरी, मैं क्या बताऊं आपको, फुलिश तो बोल नहीं सकता आप, लेकिन चाइल्ड क्वेश्चन, यही चाइल्ड बच्चे है क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर मतलब कौन सा आएगा। मैं आपको बोल रहा हूं बच्चे, लिसन नाउ, ये है प्ले, ठीक है, यह प्ले और प्लेज जो भी आपके हैं यहाँ पे, इसमें आपको बताओ मुझे कि ये आपको पॉसिबिलिटी है कि यहां से आपको एक लॉन्ग तो आएगा आएगा, डू अंडरस्टैंड, यहां से एक लॉन्ग तो आएगा। बाकी जितने भी आपके चैप्टर्स है 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 में बहुत डिफिकल्टी है चूज करना कि किस में आएगा। डू यू अंडरस्टैंड? ये एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी उसका फ्रेम ऑफ माइंड उस टाइम बनेगा, उसी के अकॉर्डिंगली सवाल बनेगा। आप मुझे बोलो कि आपका कौन सा चैप्टर वो क्लियर नहीं है, कहां डाउट्स में, वो बताऊंगा, लेकिन सर आएगा किससे ये मैं आपको बोल नहीं सकता हूं बच्चे, बिकॉज दैट इज एब्सोल्युटली अनसर्टन अगेन फॉर मी। तो मैं, मुझे खुद नहीं पता है तो आपको क्या बताऊंगा। मुझे इतना पता है कि चैप्टर्स जो आपके हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे उसके बारे में बोल सकते हो बच्चे, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी चैप्टर जो आपको पता ही नहीं है या पता चल नहीं रहा है, या कुछ एब्सर्ड है, या कुछ थॉट्स क्लियर नहीं है, तो आप मुझे उसके बारे में बोल सकते हो, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। लेकिन अब कौन सा चैप्टर में क्या आएगा मुझे वो नहीं पता है, आई डोंट नो रियली। शाबाश, जस्ट गियर अप। अच्छा, इससे पहले जो आपका, सपोज मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, द लास्ट लेसन, देखो जो लास्ट लेसन आपका है, अब मैं आपको बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसके बारे में, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। अदरवाइज एक एक टॉपिक को एक एक घंटा चाहिए बोलने के लिए, आपको पता ही है कि हम क्लास में बहुत टाइम लगाते हैं बच्चे, बट यहाँ पे टाइम की वो है। अच्छा, यहाँ मुझे बोलो आप बच्चे, यहाँ पे एक कल्चरल डिनाइल हो रहा है, एक नेटिव लैंग्वेज को, एक नेटिव लैंग्वेज को इसको डिसओन किया जा रहा है, और एक कॉलोनियल रूल किया जा रहा है। और इससे ट्रेजिक क्या हो सकता है कि अगर हम किसी कंट्री को बोलेंगे कि आपने अपनी लैंग्वेज को नहीं पढ़ना है, बल्कि जो आपकी लैंग्वेज है वो बैन होने वाली है, और आपने कुछ और सीखना है जो आपकी लैंग्वेज है ही नहीं, दैट मीन्स व्हाट, दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कल्चरल डिनायल। डू अंडरस्टैंड? अगर हम बात करते हैं लास्ट लेसन की बच्चे, लास्ट लेसन में क्या लिखा गया है, जो क्या बोलते हैं इसको बच्चे, जो फ्रांस और जर्मनी है, जो इनके बीच में आपस में वॉर चल रही थी, तो फ्रांस और जर्मनी में क्या हुआ था, वॉर होने के बाद
जर्मनी ने फ्रांस को डोमिनेट किया, शाबाश। द जर्मनी dominate or outclass these French people, and the first rule that they impose there with the power and majestic appeal, अपना पावर दिखाने के लिए, अपना अथॉरिटी दिखाने के लिए उन्होंने पहले क्या किया बच्चे? उन्होंने पहले लैंग्वेज को ही बैन किया। अगर मैं आपको चैप्टर की एक रेफरेंस दूंगा बच्चे, मैंने बोला ना इसमें टाइम लग जाएगा, अगर मैं आपको इस तरह बोलूंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा। अगर मैं आपको चैप्टर की रेफरेंस दूंगा, यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम किसी भी सेक्शन ऑफ लोगों को जेल में डालेंगे और उसके बाद अगर हम उनको की देंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि वो उस की से, उस चाबी से क्या करेंगे बच्चे? उस जेल के ताले को खोल के वहां से निकल सकते हैं, है ना? तो ये की रेलेवेंस है। ये की जो है, की एंड लॉक, ये इसकी रेलेवेंस है ना? चैप्टर बोल रहा हूं मैं आपको, चैप्टर की लाइन्स बोल रहा हूं बच्चे। अब क्या हो गया? ये राइटर बोल रहा है कि जिस सोसाइटी में लैंग्वेज ही नहीं है, जिस सोसाइटी में आपकी नेटिव लैंग्वेज ही नहीं है, समझ जाओ वो ऐसे लोगों की तरह है जो जेल में है बट उनके पास कोई की नहीं है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो बहुत देर तक उसी जेल में रहेंगे और उनको वहां को रेस्क्यू करने के लिए, एस्केप करने के लिए कोई नहीं आएगा। सो व्हाट, दिस इज द रेलेवेंस ऑफ लैंग्वेज। अब इसमें क्या बताया गया है? अगर मैं आपको बोलूंगा लास्ट लेसन का नाम, इसका लास्ट लेसन नाम क्या है? ये इसका टाइटल क्या है? द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन का टाइटल ये किस तरह रेलेवेंस है ना? या इसकी सिंबॉलिक वैल्यू क्या है? तो बच्चे मैं आपको ये बोल रहा हूं बच्चे कि लास्ट लेसन जो है, बेसिकली जो हमारा जो मेन प्रोटोगोनिस्ट है, जो हमारा मेन प्रोटोगोनिस्ट है, दैट इज फ्रांस, फ्रांस, है ना? He was a very young boy, and when he was always, escaping from the classes, then one day, when he was not again in the mood to attend the classes, then all of a sudden the atmosphere was quite nice. It was a good morning time. The birds were chirping, the soldiers were drilling, and people were very assembled at the notice board. They were reading something, but everyone out of them, they were looking very serious. They were looking very perplexed and very confused. And that's what this friends, he just came to know that again the Germans have killed our soldiers, or they have taken the land of our country. And now, by the way, he was rushing for the class. When he entered in the class, he saw a kind of very strange atmosphere there. The people were assembled there. It was a full house class. People were sitting on the back bench. Even the older men were sitting there. When older men were sitting there and they were listening to the class, basically they all know that the Germany has ordered that today is the last lesson of French language. Last lesson of French language. And that is why they were all lamenting, they were all repenting, they were all having this concern. Why we have wasted our time? Why did we not have the concern? We are French people, but we cannot speak the language properly. We are French people, but we cannot read the French language. So that is what, that is through this lesson, the writer has shown us that how language plays the role not only in the academics, but again in the culture, in the culture, in the literature, in the values, in the norms, in the ethics, and whatnot. So language plays a very key role for all these things, right? Okay. लिटरेचर का सिलेबस, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे आप बोलो, मॉर्निंग के बजाय आप कुछ बताओ कि आपका डाउट क्या है। शाबाश, विश को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं बच्चे, लेकिन आपका डाउट क्या है? प्लीज टेल मी सो आई कैन हेल्प यू। शाबाश, टाइम कितना? 10 मिनट। ओके,
अच्छा एक काम करता हूँ मैं आपको अपनी, अब आप बोल रहे हो कि सर आप, आपको क्या लग रहा है कि में कौन सा क्या आएगा, तो जो मुझे लगता है कि क्या बोल रहे हैं इसको, आपके पास ना एक चैप्टर है अगेन, द लॉस्ट स्प्रिंग। ये भी एक कंटेम्पररी चैप्टर है, द लॉस्ट स्प्रिंग बाय एनीस जंग, है ना, बाय एनीस जंग, जो भी है राइटर का नाम, ठीक है बच्चे। अब क्या है, हियर वी हैव टू चिल्ड्रन, we have these we have Alam and then we have Mukesh. Alam and Mukesh, they are symbolic with their culture, with background, with their families and with their tribes. Listen, this Alam, this was a boy from Bangladesh, from Dhaka, you know, from Dhaka. He was from Dhaka, and they were having the land there. He was a landlord. They were having land there of their family, but the floods have taken their land, the fertile part of the land, and the land was absolutely barren. It was not able to cultivate anything. Then we have Mukesh. He was in Simapuri, Alam. This Mukesh, he was in Firozabad. Mukesh was living in the Firozabad. He was from a very poor family, and again, he has the wish one day to learn the mechanics and own a car, to own a car of its own. This Sahib Alam, he was searching for food and coins, coins in the garbage, where he can have this hope that one day he will find the gold in the garbage, gold and garbage. This was the mindset of Sahib Alam, Alam. I will show you the contrast of these two children, having the background same, but having the different kind of willpower to deal with their problems and issues. The first thing is this: we have Alam, who was waiting for that day. He was looking for food and some coins in the garbage, and he thought that I am able to locate these coins, and one day I could be very lucky to find out the gold also. But that one day will when come, he never knew. He do not have the answer exactly when that day will come, when he will find the gold out of it. In the contrast of this, we have Mukesh. We have Mukesh, who was very realistic kind of person. Alam was not realistic. He was unrealistic, and Mukesh was realistic. Mukesh, he had this mindset. Mindset of what? Mindset of that I will learn mechanics, I will own a car, and I will be a symbol or example of my community, of my community, that if I can do it, the other people can also do it. मुकेश ने क्या किया? मुकेश बोल रहा है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास फैमिली जो है वो एक वो बैंगल फैक्ट्री में काम कर रही है, और वहां से जो हमारा है सर्वाइव वो करना बहुत मुश्किल हो रहा है, उस पैसे से हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, राइट? अब क्या हुआ? मुकेश ने बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा, आई विल टेक ए स्टैंड, आई विल लर्न मैकेनिक्स, मैं कहीं जाऊंगा मैकेनिक्स सीखने के लिए, मैं मैकेनिक्स सीखूंगा, और एक दिन मैं अपना गिराज क्रिएट करूंगा, और उस गिराज के बाद मैं अपनी गाड़ी खुद लाऊंगा, ठीक है? बट बेसिकली क्या है? बेसिकली ये दोनों एक ही एज कैटेगरी के लोग हैं, देयर एज इज सेम, देयर फैमिली बैकग्राउंड इज ऑलमोस्ट सेम, फैमिली बैकग्राउंड क्या इनका ऑलमोस्ट सेम है, बट yes, but with the different perspectives of their mind. इनके पर्सपेक्टिव्स काफी अलग है। मुकेश का काफी रियलिस्टिक है और साहिब आलम का काफी अनरियलिस्टिक है। मतलब वो वेट कर रहा है वन डे विल कम दैट समबडी विल हेल्प मी, बट वो कौन आएगा?
यू नेवर नो। मुकेश बोलता है कि कोई नहीं करेगा, मुझे अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, एंड दैट्स व्हाई ही इज वेरी प्रैक्टिकल। तो इसमें क्या हुआ, ये आज भी हमें दिखा रहा है, हमारे आज जो हमारी इंडिया कंट्री है, इसमें आज भी मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस है, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस हैं जो बेसिक सोशल जस्टिस के विक्टिम्स बन रहे हैं। सोशल जस्टिस है ही नहीं, शाबाश, देयर इज नो सोशल जस्टिस, और उसके विक्टिम्स कौन बन रहे हैं, बच्चे। चाइल्ड लेबर इज हैपनिंग एवरीवेयर, राइट? सो देयर आर मिलियंस, इट इज नॉट particularly and specifically these Mukesh and Alam, it is basically in general. So there are millions of children who are denying, who are denied by their by these social norms and by these social kind of things, that is they are the victims of this social injustice. They do not have liberty and freedom to dream for their life. They basically is what, they are not able to dream for their life. And when a child can dream, a child can dream in a society where there is social justice, no matter you are from a poor background or what. But if your dreams are good, if you are it's a trump over this kind of the conditions that you are facing with or you are dealing with. तो बैकग्राउंड आपके कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई पाप नहीं है, लेकिन आप अपने एफर्ट्स से उस बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। दैट इज व्हाट दिस दिस चैप्टर डील्स विद द काइंड ऑफ मैसेज। ठीक है बच्चे, तो आप इसको भी देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको आएगा। अगेन एक और चैप्टर आपका बच्चे, द इंटरव्यू, राइट? द इंटरव्यू जो है, ये भी क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये जो इंटरव्यू चैप्टर आपका है बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ये क्या बोल रहा है बच्चे, इंटरव्यू, इंटरव्यू बोल रहा है कि बेसिकली जो मीडिया है, जो मीडिया है वो किस तरह अपना रो सकता है, राइट? और इससे भी क्या होता है, मीडिया से, इससे भी लोगों का एक माइंडसेट क्रिएट होता है। अगर मीडिया अच्छा हो तो अच्छा माइंडसेट बनेगा, और अगर मीडिया ही गलत हो तो फिर लोगों का माइंडसेट भी गलत ही बनता है। अगेन, और इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, सेलिब्रिटीज में जब बोलता हूं तो मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूं बच्चे, या मैं हॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूं, या मैं अपने क्रिकेटर्स को नहीं बोल रहा हूं। मैं जब बोल रहा हूं सेलिब्रिटी, तो मैं बोलता हूं कि उन लोगों को जिनको राइटिंग में उनका बहुत नाम है, और राइटिंग में जिन लोगों ने काफी एक्सेल किया है लाइफ में, ठीक है बच्चे, तो वो काफी जबरदस्त एक माइंडसेट है। अब क्या हो रहा है, इसमें बताया गया है कि बड़े लोग हैं, जैसे ये रुडयार्ड किपलिंग है ना? रुडयार्ड किपलिंग क्या बोल रहा है, रुडयार्ड किपलिंग बोल रहा है कि इंटरव्यू क्या होता है, इट इज एज इफ somebody has taken an organ from you, somebody has taken an organ from you, या ये काफी क्या बोलते हैं इसको, ये इनह्यूमन है, या ये ऑफेंसिव है, ठीक है, या ये रेडिक्यूल इसको कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बेसिकली इस टाइम पे ये बोल रहे हैं कि बेसिकली इंटरव्यू क्या है बच्चे, इंटरव्यू जो मीडिया है, मीडिया बेसिकली क्या कर रहा है, वो लोगों की पर्सनल लाइफ को फ्रेम लाइफ में लाने की जरूरत नहीं है। आपने लोगों की जो पर्सनल लाइफ होती है, उस पर्सनल लाइफ को आपने पब्लिसिटी में नहीं लाने की कोशिश करनी है, या उसको हाईलाइट या स्पॉटलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जरूरत किसकी है, जरूरत इसकी है कि हम मीडिया से किस तरह एक एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारी सोसाइटी को ग्रोथ के लिए, या उसके क्या बोलते हैं कि ये उसके बेनिफिट के लिए काम कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, हम अगर सिर्फ ग्रामर पढ़े आएंगे तो फिर मैं पास हो जाऊंगा। बच्चे ग्रामर के देखो ना बच्चे, आप लोग समझ नहीं रहे ना, आप 12th के बच्चे हो। ये बच्चे देखो, आपका ग्रामर क्या है, एडिटिंग, शाबाश, ग्रामर क्या आपका, एडिटिंग। इसमें टॉपिक क्या है, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, इसके बाद आर्टिकल्स, है ना, इसके बाद क्या है, पंक्चुएशन, ठीक है, इसके बाद क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये एरर ऑफ सेंटेंसेस, या जिसको हम बोलेंगे स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर बोलेंगे इसको बच्चे। अब बताओ मुझे एक चीज,
ये सब टॉपिक्स के, अगर ये 5 टॉपिक है, इन सब टॉपिक्स को मिला के आपको नंबर कितने मिलेंगे बच्चे? 8। यू विल गेट ओनली 8 मार्क्स। इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपको नंबर कितने मिलेंगे बच्चे? 8। 8 नंबर पढ़ के अगर आप आ रहे हो तो आप 100 नंबर के पेपर में पास हो जाओगे बच्चे। इज दैट पॉसिबल? आप कैसी बातें कर रहे हो बच्चे? देखो बच्चे, ग्रामर जो आपका है इसमें बड़े टेंसेस पढ़ने के लिए यू नीड एटलीस्ट 10 डेज। प्रपोर्शंस पढ़ने के लिए यू नीड एटलीस्ट 1 वीक। ठीक है बच्चे? तो मैं अभी इनको डील नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप खाली ये पढ़ के आओगे तो आपको अगर वो सारे ही ठीक हो गए, और बड़ी बात क्या है, आप पढ़ के आओगे लेकिन ठीक कितने होंगे वो तो मुझे पता ही है, हम चेक करते हैं आपके पेपर्स, लेकिन आप यही पढ़ के आओगे और पास हो जाओगे, दैट इज हेल पॉसिबल? ये तो पॉसिबल नहीं है बच्चे। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बोला नोट मेकिंग, उसके 10 नंबर अकेले के हैं। वो एक टॉपिक आपने करना है, एक फॉर्मेट सीखना है, आपके 10 नंबर आ जाएंगे। ये 7 टॉपिक्स है, इसको पढ़ने के लिए यू नीड एटलीस्ट 3 मंथ्स और एटलीस्ट 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। तो ये पढ़ने के लिए आपको कितने मिलेंगे बच्चे? 8 नंबर। तो यूज कॉमन सेंस बच्चे। आप देखो ना आप क्या बोल रहे हो। मिस्टर लैम्ब वाला, हाँ मिस्टर लैम्ब वाला जो आपका है बच्चे, दैट इज अच्छा सीरियस हो? कहाँ है? अच्छा ये, ठीक है। अच्छा आप बोल रहे हो मिस्टर लैम है ना? मिस्टर लैम का कैरेक्टर जो है ऑन द फेस ऑफ इट, आप बात कर रहे हैं प्ले है ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट क्या है बच्चे? आपको पता ही है। मैं समरी वाले पार्ट को स्किप करके मैं आपको इसका सेंट्रल थॉट बोलूंगा बच्चे। मैं आपको इसको थीमेटिक सेंस से बोलूंगा कि ऑन द फेस ऑफ इट का थीमेटिक सेंस क्या बनता है। बेसिकली वी हैव 2 कैरेक्टर्स, वी हैव लैम्ब एंड डैरी। लैम्ब जो काफी ओल्ड आदमी है और वो अपने गार्डन में है, हैविंग अ लोनली लाइफ, वो काफी लोनली है, लोनली लाइफ इन अ गार्डन। और गार्डन भी क्या है, वो अलूफ है। अलूफ मीन्स साइड है, मतलब वो बस्ती से थोड़ा दूर है। ठीक है बच्चे? जहां लोग इतने नहीं आते जाते हैं। और इसके कंपेयर में क्या है, ये एक सोल्जर था, ही वाज अ सोल्जर। और सोल्जर को क्या हो गया, वॉर में एक बार क्या हो गया, एक एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन ने क्या किया बच्चे, इसकी एक टांग टूट गई या उड़ गई, वो आप समझ जाओ, इसकी एक टांग ही उड़ गई उस एक्सप्लोजन में। तो ये बेचारा लंगड़ा हो गया। अब इसने क्या किया, इसने वो जो टीन की आती है आजकल चेयर, वो लगा ली और ये इससे अपना गुजारा कर रहा है अच्छे से। एक चीज तो है, ये ओल्ड है, ये उम्र में बड़ा है इससे, डैरी से। लैम जो बड़ा है डैरी से ओल्ड है, बट इज अ रेजिलेंट पर्सन। यू नो व्हाट इज रेजिलेंट? रेजिलेंट मींस अ पर्सन हु विल नेवर गिव अप, a person who never gives up, that is a resilient। ठीक है बच्चे? ये काफी कॉम्पैक्ट एक कैरेक्टर है। अगर इसको बोलेंगे ये कॉम्पैक्ट कैरेक्टर है, मतलब ये अपनी लाइफ से नाराज नहीं, इसने जो भी इसको फेस हो रहा है, ये लाइफ को फेस कर रहा है। इसका एक ना एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ है। ये बोल रहा है कि कोई बात नहीं, मुझे ये होना था, ये हो गया, होने को हम टाल नहीं सकते, हो गया वो हो गया, वो तो हो ही गया, लेकिन अब क्या करेंगे, अब मुझे लाइफ को आगे भी जीना है। तो लाइफ को आगे जीने का पर्पस क्या है, मुझे अपने विल पावर को हमेशा हाई पे रखना है। ठीक है ना? सो इसके बाद क्या हो गया, ये अपनी लाइफ जी रहा है, अकेला है, इसकी एक टांग भी नहीं है, अकेला है, लेकिन ये लाइफ में खुश है। ठीक है? ये इसके कंपेयर में क्या है, ये हमारा जो डैरी है, डैरी जो है वो काफी यंग लड़का है, यंग लड़का है, लेकिन उसके चेहरे पे क्या है, उसके चेहरे पे एक दाग है बच्चे, इज अ बर्न मार्क्स। उसके चेहरे पर, उसका एक साइड जो चेहरा का है वो जल गया है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द नेम ऑफ दिस प्ले इज व्हाट, ऑन द फेस ऑफ इट। उसके चेहरे पे कुछ दाग है और उसको लग रहा है कि दैट दिस इज द एंड ऑफ माई लाइफ। एंड वन डे व्हाट हैपेंस, वन डे ये अचानक इसके बाग में आता है, इससे मिलता है, एंड आफ्टर हैविंग the chat or the conversation with this dairy and with the lamb, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों आपस में होते हैं कंट्रास्टिंग, they are opposite poles, north pole south pole, right? Dairy is very pessimistic and Mr. Lamb is always optimistic। ठीक है बच्चे? अब क्या हुआ, ये दोनों आपस में बात करते हैं और बात करते करते क्या हो गया बच्चे,
बात करते करते ये हुआ, बात करते करते ये हो गया कि इनका जो माइंडसेट है वो माइंडसेट चेंज होने लगा। डैरी को लग रहा है कि आज तक मुझे मेरे अपनों ने ऐसी बातें नहीं बोली है, इतना नहीं मुझे मीन्स पॉजिटिवली कुछ बोला है जितना मुझे ये लैम्प बोल रहा है लाइफ के बारे में। और बाय द वे, लैम्प ये बातें मुझसे क्यों कर रहा है, उसको मुझसे क्या मिलेगा? बेसिकली ही वांट्स टू चेंज, चेंज ऑफ व्हाट, चेंज ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट किसका बच्चे? डैरी का। ये डैरी का माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कर रहा है कि ये उसको बोलता है कि देखो, आप यंग हो, आपके चेहरे पे दाग है, सो व्हाट, इट्स हियर, इट्स देयर, इट विल रिमेन फॉर एवर, बट इससे क्या करोगे? यू विल नॉट एंड योर लाइफ, और दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। डू अंडरस्टैंड? ये हुआ, जो होना था वो हो गया, लेकिन आइंदा से आपने क्या करना है? आपने ये ध्यान रखना है कि आप अपनी लाइफ में एक क्रिस्मेटिक, एक मैग्नेटमस एक लाइफ आप कैसे जियोगे? दैट इज ओनली बिकॉज your mindset. This doesn't matter. What matters is your perspectives. आपके perspectives क्या है? आपकी choice क्या है? आपके goals क्या है? आपका mindset क्या है? आपके ethics क्या है? आपके values क्या है? आपके norms क्या है? That what matters, not the face. ऐसा नहीं कि फेस मैटर करेगा, फेस मैटर नहीं करता बच्चे। व्हाट मैटर्स इज ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और वो डायरी को ऐसे इनबिल्ट होता है, डायरी को लगता है कि हाँ वाकई ये मुझे अपने माइंडसेट से। सर कल वाले पेपर के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दो। देखो यार बच्चे, दिस इज वेरी सिली यार, आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस। ये आप क्या बोल रहे हो कि आप मुझे मार्क्स बता दो? मैं कैसे बोल सकता हूँ बच्चे, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुन नहीं रहे हो, राइट? और कुछ है डाउट बच्चे? और कोई डाउट? शाबाश। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। चाहता हूं कि आपका पेपर सही हो जाए बच्चे, ठीक है? ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।